So very good afternoon to all. I welcome you all to this session, which is on e-commerce arriving at the unit-wise profitability. I'll just share my screen so that I can take you through the presentation. I hope my screen is visible. Then I'll start. If someone can just confirm me if the screen is visible. Okay, thank you. Thank you, Shantanu. So I have been often asked a question कि मनीष जी शुरू तो कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये बताइए कि मतलब कब, कैसे, कितना लगाएं, क्या करें. So very odd kind of questions, and across my sessions across the last 4-5 months मैंने ये try किया है that I have tried to tell you that whenever you are starting, start with a product or a category which is very comfortable to you, जिसका आप customer feedback लेके you can kind of uh, tweak the product very easily. The sourcing पे आपका control हो, you have prices under control, you have long term supplies जो आप घटा बढ़ा सकते हैं. You can make sure the product reaches the farthest corners of the country through the warehouses or through the I think I had got disconnected. Sharing the screen again. So if you are able to take your product to the farthest nooks and corners of the country, आपके warehouses हों, चाहे वो Amazon या Flipkart के warehouses हों, then you should pick up a particular product category. And then comes the real game कि आप अपने product को कैसे बेच रहे हैं, क्या उसका listing है, कितना attractive है, आपको velocity बढ़ाने के लिए, ratings बढ़िया लाने के लिए, आपको कैसे engage करना है customers के साथ, कैसे product में और listing के साथ, how do you want to do it. I'll just tell you a very small thing that happened today, in one of our listings today, there was a product compliance issue that had come up, and it took me 1.5 hours to resolve that issue, because we are using Power BI, we are using Excel, we are using one also a little customized software to manage all those reports. It took us 1.5 hours to speak to Amazon and actually get to that particular order ID through one of the reports जो usually लोग देखते नहीं हैं seller level पर. और उसके अंदर we had to prove to them that वो जो product policy का complaint था वो गलत raise हुआ था. We had to give facts and figures for that. But the point was that all those things are taken very seriously by the marketplaces. And what had happened was that the customer had wrongly read the dimensions of our item. जो प्रोडक्ट डायमेंशंस की बजाय उसने जो बॉक्स की डायमेंशंस होती हैं उसको पढ़ के बोला कि भाई मैंने तो ये देख के ऑर्डर किया था, आपका प्रोडक्ट तो छोटा निकला. So how listing also plays a very important role. So immediately what we did was that surprisingly in that listing हम लोगों ने measurements का जो creative था या जो picture था वो नहीं डाला हुआ था, तो वो हमने फटाफट डलवाया. और हमने ये बताया कि कस्टमर ने गिफ्ट बॉक्स डायमेंशन को प्रोडक्ट डायमेंशन के साथ कंफ्यूज किया है. प्रोडक्ट डायमेंशन हमने यहाँ पर दे रखा है, गिफ्ट बॉक्स का यहाँ पे दे रखा है, तो इस कंप्लायंस का जो इफेक्ट है हम पे नहीं आना चाहिए. So all those things become very important whenever you are doing this business. But coming to the unit-wise profitability part, before that, I'll just introduce you again quickly to those people who have joined for the first time. So we are a Digit Design Group, digital marketing agency. We are serving over 100 plus brand owners currently. And Digicart India, we are a leading e-commerce player in the market. We are selling roughly around 20,000 units every month, and was just sitting down with the team. We plan to take this number up to around 35,000 units in the coming year per month. We are on course for that. We are launching new product categories, and whenever I share my knowledge with you, basically I also get to revise certain things, and in case I forget some basics, so it helps me get the basics right again.
Through eComically, the thing that I told you, that we are taking some data from this customized this thing, a software. It's a SaaS thing that we have developed not only for us, for other people also who can, may like to use it for the tags or the payment reports. And we are working on the campaign reports. And True Turtle is the brand that we have launched. So we have launched about a couple of product categories in that, and within the next few months, we'll be launching more. So you'll see and hear more about us in the coming days. And all this, when I say, we are just about, you could say, 4.5 people team, and plus me. So the accounts person is also doubling up for, the other vertical also. And then we have a person in data analytics, seller panel management, the warehouse operations, and the operations part of it. So we are having 4 own managed warehouses, Amazon, Flipkart warehouses. We have premium and platinum sellers with Amazon and Flipkart. And a slightly a month old slide, the October month, very famously called the Jupiter month, where we did roughly around, you could see 27,000 units that we did. And a gross sale of roughly around 6.2 CR that we did. So today's topic, arriving at per unit profitability. If I may hear from any person who has a question, I will take the question beforehand also, and it will help me present the remaining 3 slides that I have better. In case anyone has a question, whoever is attending today. Yes, Sachdevji, please. Go ahead, sir. You can unmute and please speak. Hi, thank you so much for taking your time and sharing your knowledge with us. So a simple question is, whenever we do a unit economics profitability, we understand what the payouts are from the Amazon calculators or FBA calculators, but they often don't match with the actual payouts. Okay, that's the first. And whenever we look at unit economics profitability, we even want to look at what is the marketing spend we are doing on that SKU or on that product. Perfect. So if you could share some light on that also, that will be great. Okay, so you want to say that the payments do not match. That is one part of it. Okay. Yeah. And the second thing is that the spends per unit, how do you see it? Okay. Yes. Any other question? And there are a lot of hidden charges. How do you take that into unit economics? For example, there is a storage fee. Storage fee, they essentially don't give you per SKU. They give you only like at an account level. Okay. Okay. So, that's good to know that you don't know. So, it gives me one so I don't know. point to tell you. Yeah. Yeah. Okay. And the second thing, that the last thing is that even a return percentage hampers the profitability of a product. So I would say the biggest leakage in our e-commerce business is, for everybody in the room, would be returns. Okay. Because if you don't account for returns properly, it does not give us the right numbers. Okay. So Amogji, what it tells me that return is something that you have given me just a spur of the moment idea that the next session would be on the returns. So I may like to take it a little separately. Okay. And I will come back to your question, because in returns I'll tell you that whenever we are dealing with we have a brand, and we have been dealing with other brands also when we started selling, and the number is quite sizable. So we always have a back-to-back arrangement, but yes, the cost of refurbishment does come down to us, a bit. So right now we have it under a lot of control because of the numbers that we have, and we exactly know that how much unsellable inventory is going back to the factory, what is the refurbishment cost at the factory level, and at the gross level, how much it is making an impact on our sales as a percentage. So we know that, but I will take it up, maybe not today, because that will be a whole another topic. But I definitely, you have given me an idea to take it up in the next session. But yes, the payments, the storage, the spends per unit, I'll take it up today. Aniket ji, yes, please. Okay, thank you. In continuation with the fantastic question asked by the gentleman before me, I think his name was Amog. So there is a dashboard by the name of payments inside Amazon. It shows a fantastic graphic, like waterfall model kind of a graphic. Yes. So it would be great if somehow we can tie that up eventually with the amount that comes to our bank account. So there is a graphic, there are some numbers here.
But if we try to tally that with, let's say, we made X sales 10 days ago, what is that going to translate into payments into my bank account? Somehow the reconciliation doesn't seem extremely straightforward. Yeah. So there are two aspects to it. I won't be able to take this question right now because it is very much variable. I'll tell you why. Because whenever Amazon or Flipkart promise you a payment, they promise you the payment, say 3 days after a dispatch or the customer receives the package, something like that. Okay. If you go to see your Amazon account, it will always show certain open orders. So the order that you receive, sometimes it gets confirmed maybe a day later, and sometimes it gets dispatched maybe another day later. So there is a discrepancy in the customer dispatches versus the customer orders that you're receiving. And once the dispatch happens, the payment then comes, say like for us, because we being the platinum or the premium sellers, we get the payment into our account released within 3 days. In case the return happens, it gets deducted again. So that's one point. So it is basically very difficult to understand that if I have done a sale, how much it is going to come to me. Broadly, what you can say is, very safely you can assume that if you are on a 7-day cycle, you can assume that in case I am getting a payment, say a weekly payment, so you could assume that you can just take out about 2 weeks, you can do less, and then T minus say 21 to T minus 14. So you can work that out yourself. If you may try T minus 20 to T minus 13, like that. So ये तो वैसे 8 दिन हो जाएंगे. So T minus 20 से T minus 14 लेकर देख लीजिए, या आप T minus 19 से T minus 12 लेकर देख लीजिए. तो you will hit a figure or an amount जो आपको जो है पेमेंट रिलीज होगी. बट अगर आप पेमेंट शीट में जाकर देखते हैं तो वहाँ पे एक आपका there is always an amount which is there, which is being held as a balance, जिसके अंदर से अगले हफ्ते की पेमेंट में वो लोग जो है उसका कुछ पोर्शन रिजर्व करके Correct. There's a आपको reserve देंगे. amount. Correct. या यस. So this is a little difficult to tell. तो but basically अगर आप वो T minus 12 से T minus 19 थोड़ा सा hit and trial करके देखेंगे, तो you will come to a ratio wherein you can say कि अगर मैं इतनी सेल करता हूँ तो मेरे को इतना पैसा आता है. बट वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड रहेगा आपके केस में. Got it. राइट. Thank you. बिकॉज हो सकता है आपकी इन्वेंट्री जो है डिपेंड करता है कहाँ पर पड़ी है, दिल्ली से जा रही है या आपके 4-5 वेयर हाउसेज में पड़े हैं वहां से जा रहे हैं. द स्पीड ऑफ द डिस्पैच फ्रॉम यूनिट, जैसे दिवाली दशहरा के टाइम पर मेरे लगभग आप समझ लीजिए 1,500 या कई बार 2,000 प्लस ऑर्डर्स की पेंडेंसी हो गई थी, जो ऑर्डर्स ओपन पड़े हुए थे. तो वो जब प्रोसेस होंगे, वो जाएंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट आएगी. सो दिस यूज्ड टू हैपन. सो ब्यूटीफुल. आई थिंक आई हैव टेकन 2 very good points. One I have kind of diverted for the next session, and one I have been able to tell that it's a hit and trial that you can do. The payments do not match the spends per unit in advertising and the storage cost per unit. Storage cost per unit I will take. In Amazon, you have a report on the storage, which usually comes. आपको storage fees usually 1st to 7th के बीच में लगती है. I will ask my team who takes out the report to tell you the exact path. But I, for myself, the team has to give it to me whenever the storage report comes. कि हमारा per unit per ASIN wise storage कितना लग रहा है. And in fact, we have been the first to report any discrepancy in storage cost to Amazon at least twice in the last, I think, 1.5 years. So एक बार उन्होंने डबल लगा दी थी, एक बार उन्होंने ज्यादा लगा दी थी. We were able to flag it off and tell them that boss, you are taking double or a little higher, so you change this. So we keep a very very strict control. And storage जो report है आपके पास, वो exactly जो है unit wise, FC wise, SKU wise आपके पास आती है. So I will, in case any of my team member, Millie, you are there. So Millie, in case you are there, please just write it out, and we will share it with Amog ji, the path. I will take from the e-commerce team member and share it with you. Coming back, the payments do not match and the spends and etc. So I had taken a session on the payment report of Amazon, and I had taken a payment report of Flipkart also, and I will share those recordings. So I think that would be able to help you a lot, because if I take them in this session, it will be difficult.
And of course, I will throw open, some free coins for you to use at eCOMically, which is our platform. You can just put in your payment report and you will get exactly the analytics that you are, looking for. So having said that, Flipkart की पेमेंट रिपोर्ट बहुत ज़्यादा आसान है. फ्लिपकार्ट की पेमेंट रिपोर्ट इसलिए आसान है बिकॉज वो ऑर्डर वाइज आपको चीज़ बताती है. वो ऑर्डर वाइज बताती है ऑर्डर कितने का था, रिटर्न हुआ था, इसमें मार्केट प्लेस के फीस कितना लगा था, टैक्स कितना लगा था, अगर कोई SPF का क्लेम आया है वो कितने का था. वो लाइन आइटम बाय लाइन आइटम आपको क्लियरली बताती है. दैट इज वेरी क्लियर रिपोर्ट. फ्लिपकार्ट की पेमेंट रिपोर्ट अमेजोन से बेटर है. अमेजोन की पेमेंट रिपोर्ट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. और उसमें एक छोटा सा पंगा है. उसमें पंगा ये है कि अगर आप सपोज MFN कर रहे हैं तो उसके अंदर शिपमेंट के चार्जेस जो हैं आपको बाद में लगते हैं. तो दैट गेट्स रिकॉर्डेड एट द ऑर्डर ID लेवल. और अगर उसके अंदर एक एक प्रॉब्लम और है. उसके अंदर ये प्रॉब्लम है दैट इन केस द अमाउंट गेट्स से सपोज उसका RTO हो गया, अगर वो रिटर्न हो गया है, तो उस रिटर्न में आपको इमीडिएटली पूरे पैसे वापस नहीं मिलते. वो आपको 2 बार में पैसे वापस मिलते हैं. और जब वो दूसरी बार पैसे वापस मिलते हैं तो उसके अंदर जो है सपोज आपकी वेट हैंडलिंग का भी पैसा वापस मिलता है अगर RTO हो जाता है. तो वो जो वेट हैंडलिंग का पैसा है वो एसन लेवल पे नहीं आता, वो ऑर्डर ID के लेवल पर आता है. तो आप अपना चेक कर रहे हैं, ऑर्डर 100 रुपए का प्लस हो गया, बहुत अच्छी बात है. मार्केट प्लेस भी ऑर्डर ID है, उसके अंदर SKU है, सब कुछ है. वो 20 रुपए की लग गई, माइनस हो गया, सब समझ में आ गया. बट जब वो रिटर्न हुआ, उस रिटर्न के अंदर जब उन्होंने आपको पैसे वापस करे, से वेट हैंडलिंग के 15 रुपए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके अंदर वो SKU नहीं देते, वो उसके अंदर जो है सिर्फ ऑर्डर ID देते हैं. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक इट आउट फ्रॉम द पेमेंट रिपोर्ट एंड देन मैच इट अप ऑर्डर ID को उसके साथ SKU के साथ कि ये कौन सा SKU इस ऑर्डर ID में था, जिससे हमारे को एग्जैक्टली वो चीज पता चल पाए. So these things I had taken up in the Amazon payment report and the Flipkart payment report. I will share the links. I'm requesting my team member Millie here to please share those links. I'll share the entire playlist. Per unit profitability mein I will come. I am coming more from a strategic angle here. So सबसे पहले एक हम चूज करते हैं कि भाई हमारे को प्रोडक्ट जो है एक कैटेगरी में बेचना है. तो अगर आप जैसे देख सकते हैं ये ग्रे स्केल है, 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक. सपोज मतलब दिस इज जस्ट अ रेफरेंस टू ₹100. इट इज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल प्रोडक्ट. से सपोज जैसे हम गैस स्टोव्स बेचते हैं तो गैस स्टोव्स जो हैं 1000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक बिकते हैं. सो दैट हैपन्स. बट द मीट is between say maybe 1500 to 4500 like that, or maybe 1200 से लेकर जो है 4500 5000 तक है. तो I have just made it on a scale say maybe of a 50 to 200 because मेरे को एक average product price लेके चलना था which is 100 rupees. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कैटेगरी वो चूज करिए जो बहुत ही अच्छी कैटेगरी हो आपके लिए, आप सोर्सिंग अच्छी कर सकते हैं. और अगर वो कैटेगरी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वेदर वो कैटेगरी करनी चाहिए या नहीं, उसका भी मैंने एक वीडियो दे रखा है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर वो कैटेगरी 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का सामान बेच रही है, डू नॉट गो फॉर दी हाईली एक्सोटिक स्टफ, डू नॉट गो फॉर दी हाईली अफोर्डेबल और चीप. You go for something which is in the sweet spot of say maybe 80 to 125 rupees. आप इस जोन में रहिए. प्राइस कंपटीशन करने में कोई फायदा नहीं है, ना पैसा मिलेगा ना यूनिट वाइज वैल्यू मिलेगी. आप बस एक जिसे कहते हैं काम करते रह जाएंगे. किसके लिए काम हो रहा है आपको समझ नहीं आएगा कि कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं या Amazon फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हैं, पर आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होंगे. तो ट्राई टू हैव अ स्वीट स्पॉट विच इज हायर देन दी मार्केट्स लो एंड विच इज मच लोअर देन दी मार्केट्स एक्सोटिक, क्योंकि वहां पे आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगी. से सपोज यू हैव चोजन कि मैं 80 से 125 रुपए के बीच के अंदर अपना सामान बेचूंगा. दिस इज अ वेरी गुड चार्ट टू सी. I have taken an assumption and trust me when I say this, for very, very matured products, this is not a bad assumption to have. Okay, this is not a bad assumption to have at all. So I have taken sales, जैसे हमने 80 से 125 रुपया प्रोडक्ट हमने पकड़ लिया एक एवरेज कि हम ये प्रोडक्ट करेंगे. सपोज उसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस सपोज 100 रुपीज है,
आपकी उस पे परचेज जो है 75 रुपीज है, मैं ये नेट ऑफ टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग नेट ऑफ टैक्सेस टोटली। आपका ग्रॉस प्रॉफिट जैसे 25 रुपीज है, मार्केट प्लेस के एक्सपेंसेस 15 रुपीज हैं, एंड यू हैव योर एक्सपेंसेस, अगर आप देखेंगे लोकल ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज 2.5 रुपये लग रहा है, मैन पावर एंड एडमिन, एडमिन के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जैसे जो रिटर्न रिफर्बिशमेंट कॉस्ट हैं वो भी आ गए हैं, मैन पावर कॉस्ट भी आ गए हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूज वॉल्यूम्स, yes, you can have, safely you can say that, this is the number that you are, you are kind of looking at, maybe slightly here or there, 1 का 1.5% हो सकता है, 1.5 का आधा मुश्किल है, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Advertising and marketing, for a very stable product, 1.5 is not a bad number. It looks very aggressive, but trust me, we have achieved it. For the launches we had done, a few years back, and for the new launches, I will tell you, how we kind of have something in mind और जिसके basis पे हम चलते हैं। सो नेट प्रॉफिट इस केस के अंदर आपका जो है वो 5 का आता है। सो वेन एवर यू आर हैविंग मोर एक्सपेंसेस एनी विच वेयर, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको नेट प्रॉफिट में डेंट मारेगा। आप एक चीज देखिएगा, दैट व्हेन आई एम सेइंग कि आप 1.5 रुपया का एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में खर्चा कर रहे हैं मार्केट प्लेस के ऊपर, उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक स्टेबल स्टेट में 1/3 सेल जो है आपकी इनऑर्गेनिक होनी चाहिए, और 2/3 सेल्स जो है ऑर्गेनिक होनी चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छे उसमें चला जाता है, तो आपकी ऑर्गेनिक सेल जो है वो 80% तक भी चली जाती है, 90% तक भी चली जाती है। और अगर आपका वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से अलग अलग वेयर हाउसेज में फैला हुआ है, तो दैट कैन इवन गो हायर। मतलब कई बार देयर हैव बीन टाइम्स जब हमें दिखता है कि हम 5, 6 या 7 दिन के स्टॉक लेवल्स से कम हैं, तो हम एड्स बंद कर देते हैं। तो हमारा ये वो है कि अगर वेन एवर वी आर लेस देन 7 days ऑफ स्टॉक, वी स्टॉप दी एड्स ऑन एनी पर्टिकुलर एसिड। तो वो एसिड फिर भी बिक रहा होता है, ठीक है, वो 100% नहीं बिक रहा होगा, 70% बिक रहा होगा, 80% बिक रहा होगा, पर वो बिक रहा होता है, because such is the kind of speed that has already been there, or it has been established. And of course, during Dashera Diwali time we face this, because हम लोग कई बार हमारे को फैक्ट्री से थोड़ा माल मिलने में 1-2 दिन का डिले हो गया, हमारे को शिपमेंट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, बिकॉज उन्होंने जो है हमारे थोड़े से जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम कर दी थी, या हमारे को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि एफसीज जो थे वो फुल थे। तो उसकी वजह से देयर वर टाइम्स व्हेन वी वर लेस देन 5 days 7 days ऑफ स्टॉक, एंड वी यूज्ड टू बी वेरी रूथलेस अबाउट इट। हम इमीडिएटली उसको बंद कर देते हैं एड्स को। तो देयर हैव बीन टाइम्स कि ऑर्गेनिक जो है आपकी 90% 100% सेल्स दे रहा है, बट ओवरऑल इन स्टेडी स्टेट आप ये समझ सकते हैं कि इफ द प्रोडक्ट हैज डन रियली वेल, यू हैव वर्क वेरी हार्ड ऑन दैट, आपने उसको एक अच्छी तरीके से खड़ा कर दिया है मार्केट के अंदर, तो वो 1.5 रुपये जो है आपको 33 रुपये की सेल देकर जाएगा। और क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक 2/3 सेल हो रही है, विच मीन्स कि टोटल पे आपका आरओआई लगभग 66 के करीब रहेगा, और आरओआई इन ऑर्गेनिक का आपका 22 के करीब रहेगा। सो एनी क्वेश्चंस इन अंडरस्टैंडिंग दिस? Any questions anyone has in understanding of this? No questions. Shall I move ahead? Okay. So just going ahead. अब ये मैंने ये तो सोच लिया है कि भाई ये स्टेबल स्टेट में 1.5 रुपये पर आना चाहिए, बट लोग यूजुअली ये सोचते हैं कि भाई हम कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, हम मंथ 1 में क्या एक्सपेक्ट करें, मंथ 2 में क्या करें, व्हाट आर द काइंड ऑफ नंबर्स दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर। एंड फॉर देम आई हैव built a very very small table. This is just a guidance. We can discuss, whoever wants to discuss in depth and in detail, matlab we can also get on a call, not only today but anytime you are feeling like to have a call with me. Now just look at this number that I have taken for you. Month 1 में, say suppose we are to achieve a sale of say maybe 100 rupees, वो month 8 मैंने जैसे लिया है, अगर मंथ 1 में मैं 10 रुपए की सेल करता हूँ, इट इज क्वाइट पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, कि मैं 8 रुपए का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कर रहा हूँ, यानी 80%, यानी ROI इज जस्ट 1.25। मंथ 2 के अंदर 20 रुपीज पे क्वाइट पॉसिबल
मैं 14 रुपए का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको अपने ये स्टेप्स बढ़ाने हैं, सेल्स बढ़ानी है, और आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट अमाउंट में तो जैसे मंथ 5 तक बढ़े हैं, बट आरओआई एक कंसिस्टेंट लेवल पे ड्रॉप हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन में हमारी आरओआई ऊपर नहीं जाती। सो वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ प्रोडक्ट जस्ट अबाउट 1 month बिफोर दिवाली। आई विल टेल यू दैट वी वर एबल टू रीच इन द मंथ ऑफ नवंबर। हमने अक्टूबर में लॉन्च किया था ये दशहरा से पहले। इन द मंथ ऑफ नवंबर हम उसको 18% उस पे ले आए थे, ए कॉस्ट पे। ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक वाज वेरी हाई, ऑर्गेनिक वाज वेरी लो, पर हम उसको 18% ए कॉस्ट पे ले आए थे। देन व्हाट हैपेंड इज, अच्छा खासा नवंबर में 18% ए कॉस्ट चल रहा था। वी वर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द कैंपेन्स। वी डिड इट ऑन आई थिंक 7th लेट नाइट। 28, 29 एंड 30 नवंबर, 3 दिन ए कॉस्ट हमारा शूट अप हो गया 35%। Then we thought something went wrong. So we optimized it again on December 1 when we came to office. December 1, 2, and 3, the A cost shot up to 65%. We came back on December 4. आफ्टरनून में बड़ा दिमाग लगा के हमने पहले वो चेंजेस रिवर्स करे। December 4, December 5, the A cost was 12.5%. So, जो मैंने आपको ये टेबल दिखाई है, it looks very linear, but there is a lot of working behind that. Doing those little tweaks, that's a lot of working. तो ऐसा नहीं है कि एकदम ये चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, but yes, if you talk about 8 months time, so then I can safely say that you should be looking at the ACOS of about maybe 10 to 12%, or even less, and then depending on a little more, sorry, मतलब you can look at it about 18-20% also, वो भी चलेगा आपको। और अगर आप ऑर्गेनिक उस टाइम तक 50-50 ला पाते हैं, या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की रेशो अगर आप देखेंगे, तो अगर आपकी ग्रॉस सेल्स 100 रुपए की आ रही है 10 रुपए एडवर्टाइजिंग का खर्चा करके, and if this works for you, you can have a look at this table wherein you have been able to spend 58 and 45, roughly around 103 and 26, 130 rupees. You have spent on doing a sale of 3 250, 350 and 410। तो आपने लगभग लगभग 130 रुपया खर्चा किया है 8 महीने के अंदर 410 रुपए की सेल करने के लिए। अगर ये एक ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर अगर आपकी ऑर्गेनिक परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, और आपका अगर एकॉस नीचे जा रहा है, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। आई विल गिव यू अनदर बॉल मार्क फिगर इफ यू आर रियली लुकिंग एट इट। अगर आपको कोई भी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी है, आप कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए का बजट लेके चलेंगे फॉर अबाउट 6 to 8 months फॉर यू टू स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजिंग। And then if you will reverse work these tables basis that expense, you can actually come out to the kind of sales that you wish to do, and then you can reverse work out कि क्या मैं वो sale कर सकता हूँ। Because as I told you that I am anticipating at least 2.5 times jump in the number of units that we are going to sell in the next year. I am already taken, already in process of taking 4 new GST registrations in 4 new states, already enrolling up the warehouses. So all that planning needs to be worked. So ये चीज आपको समझ के थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो खुद करनी पड़ेगी। I can only give you certain tool or certain help, and in case someone wants even more detailed help, I am available at the number or the WhatsApp or the emails, whatever you have for me. I am very much available for you guys. Any question in this? Do we have any question in this? Don't tell me I was this brilliant because this was really a little complex because it was all numbers. No question?
ओके, सो अमोक जी, आई विल आंसर योर क्वेश्चन ऑन स्पेंस पर यूनिट. अगर आप Amazon में जाएंगे तो whenever you go to campaigns and you take out a report in the campaigns, there is a report which gives you the report product wise campaign report is available, wherein you can exactly and easily see that on which product across one campaign or 5 or 10 campaigns how much amount of money has been spent. So you can use that for your calculations. Payments not matching, I will tell you another thing that what happens is that जो storage cost है Amazon का, वो of course you can take down from a report, and once you take down from the report you can apportion to the SKU. Same you can do with the spends also. आपको प्रॉब्लम आएगा जब वो जो रिटर्न्स के SPF होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं उसके अंदर ऑर्डर आईडी होती है, एसिन नहीं होती. वहां पे आपको परेशानी आएगी, बिकॉज वहां पे जो क्लेम्स मिलते हैं यू वुड नॉट कम टू नो इजीली दैट वेयर एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली हैव यू गॉट और कितना अपोर्शन होना है. तो वो एक आपको जो है आपको एक उस पे लेना पड़ेगा ऑन a total basis rather than being able to portion ASIN wise. फ्लिपकार्ट के अंदर अगेन जैसे पेमेंट रिपोर्ट जब भी आती है, उस पेमेंट रिपोर्ट में ऑर्डर आईडी बाय ऑर्डर आईडी जिसके अंदर SKU भी होता है, आपको सब डेटा मिलता है. प्रॉब्लम सिर्फ एक ये है कि भाई अगर आप अपना कोई एनालिसिस कुछ भी कर रहे हैं, डू नॉट डू इट ऑन अप्रूवल बेसिस. आप उसको ये मत सोचिए, या ऑर्डर आईडी बेसिस, आई एम सो सॉरी, नॉट दी अप्रूवल बेसिस बट दी ऑर्डर आईडी बेसिस. आप उसको ये मत सोचिए कि मैं एक ऑर्डर आईडी का पूरा हिसाब निकालूंगा, बिकॉज फ्लिपकार्ट के केसेस में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, होता क्या है कि हमारे यहाँ से माल गया, हमारे यहाँ से अगली पेमेंट साइकिल में वो माल रिटर्न आया, उसकी अगली पेमेंट साइकिल में हमारे पास SPF क्लेम आया, उसकी और अगली पेमेंट साइकिल में उसका कुछ और क्लेम था वो आया. सो द पेमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 or 4 or more cycles which can be 3 or 4 और मे बी मंथ्स अपार्ट, क्योंकि जब हमने बहुत ज्यादा क्लेम किया फ्लिपकार्ट पे, कुछ इश्यूज हुए थे, तो 5-5 6-6 महीने में भी पेमेंट्स आई हैं पर्टिकुलर ऑर्डर आईडीज पे. तो अगर मैं अक्टूबर या नवंबर की ऑर्डर आईडी लेकर बैठ जाऊंगा कि मैं इन्हीं पर हूँ जो है मैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा, वो होना मुश्किल है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू डू इट ऑन अ कैश बेसिस. मेरा ये कहने का मतलब है कि आप एक टाइमलाइन ले लीजिए कि 1 से 30 के अंदर जो भी मेरे पास पेमेंट्स आई हैं और जितनी भी मेरी यूनिट्स गई हैं, मैं उसके हिसाब से अपना जो है यूनिट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी निकाल लूंगा. थोड़ा बहुत हिसाब में फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत, बट प्रीवियस पीरियड का जो माइनस हुआ है वो नेक्स्ट पीरियड उसमें थोड़ा सा जुड़ जाएगा, या जो प्रीवियस पीरियड का थोड़ा सा आया हुआ है वो नेक्स्ट पीरियड का वो पोर्शन, कुछ पोर्शन नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा. तो बेसिकली आप एवरेज आउट हो जाते हो, इतना बड़ा फर्क नहीं आता है. ओनली इन हाई सेल्स मंथ्स थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, बट मोर और लेस मंथ ऑन मंथ आपको या वीक ऑन वीक, मैं कैश फ्लोज फोर्टनाइटली बेसिस पे निकालता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वेदर यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन और नॉट. एनी क्वेश्चन? Amok ji, you wrote it does not capture data properly. What exactly does not capture data properly? A lot of sponsored display products, sponsored display campaigns, and sponsored brand campaigns. Now, the product report does not capture the data properly. We've seen it. We've like matched it also. So we've seen a big discrepancy there sometimes. जो आपने advertising का कहा ना, कि you Sir, can take out the product level मैं आपको ना report. एक स्क्रीन दिखाता हूँ, ठीक है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. आई एम जस्ट स्टॉपिंग the screen. I'll show you something. Wait. Under products, under advertising, you can go under products. Just उसी wait, की sir. बात करें ना? हाँ जी, sir. Sure. Allow me to show you something, please. Give me a moment. I'll show you something. Wait. इनका ना डेटा मैंने काफी क्रॉस चेक किया हुआ है Amazon के साथ. अगर डेटा आ रहा है तो यू कैन ट्रस्ट द डेटा. वो डेटा, जैसे मैंने बताया कि पेमेंट्स रिपोर्ट में थोड़ा ये डिस्क्रिपेंसी है, वो चीज़ अलग है, पर जो डेटा आ रहा है यू कैन ट्रस्ट दैट डेटा इजीली. वेट, आई हैव जस्ट ओपन समथिंग. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन वेरी फास्ट, मे बी नेक्स्ट 30 seconds. आई विल शो यू समथिंग. वेट.
Mokji, I'm not able to take out a Power BI report. Sitting in a little, inside of the office. यहाँ पे network मेरा proper नहीं आ रहा है. It's very heavy. But I will take it up, separately with you. But I'm 100% sure that Absolutely, absolutely. जो product data है ना वो बिल्कुल clear आता है sir. We apportion, basis that only, that how much spend we are doing, and in fact not only that, that data also helps us to optimize the campaigns. So there have been times जहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट दो दो तीन तीन कैंपेन में चला रखा है. तो हम कई बार हमारे को ये लगता है कि थोड़ा मिक्स एंड मैच हो रखे हैं, मतलब दो तीन कैंपेन में तीन चार प्रोडक्ट चल रहे हैं. तो हमारे को जब लगता है कि भाई एक कैंपेन किसी एक प्रोडक्ट के लिए अच्छा कर रही है तो हम बाकियों को स्लो कर देते हैं या पॉज कर देते हैं. सो वी यूज दिस डेटा वेरी इफेक्टिवली प्रोडक्ट का. Then Manish जी आप अपने coordinates डाल देंगे where we can email you, WhatsApp you, or Yes, call you, I because will. I will. मेरे पास है, I'm not sure everyone has it. I'll put it just a moment. I think let's get on with the webinar. I think my questions No, can be answered later. I'm over with the webinar because I take very small topics, not more than half an hour. Millie, you are writing it down. Just a moment. I'm writing my email ID and my phone number. In case I'm not able to pick the call, I definitely call back and definitely respond to the messages. Any other question we may have, or we can then call it a day. And Amogji, you have shared, Millie has shared, my colleague has shared the playlist. उसके अंदर आपको Amazon payments या Flipkart payments पे मेरे थोड़े insights मिल जाएंगे. Manish जी, I'll connect with you offline. मैं आपके YouTube को भी subscribe कर लिया. I think if you're free right after the webinar, I'll just have a quick 2-minute chat with you. Okay, what's your number, sir? Or later. Okay. I think whenever you get done, I'll just call you. Sure. Okay. Any other question we may have? Anyone else? In case we have any question, I'll take it up. Okay, so thanks a lot, friends, for attending. As already suggested, I'll come with the next session on the returns management, and I will also try to link it up with the health compliances, account health, so that you can see it together, and you should know what you should do in case of when these things are coming out. So thank you very much once again, and see you soon. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye.